Hello students, good morning. Welcome to e-learning. We are continuing with the chapter 5, that is cost of production and concept of revenue. We have completed various concepts of cost, that is we find real cost, opportunity cost and monetary cost. So we have learned that particular topic and we are going with the next topic, that is in our lecture 4 we are going to learn about short term and long term, which is also known as, we find that short run and long run periods in economics. So you find that what does the short run periods in economics are there and what does the long run periods in economics are there, we are going to learn in this topic. So let's start with the first one, that is the introduction of short term and long term. So here you find that as a time period has been came, you find that in a short time or in a short term monetary cost is presented. What is monetary? Monetary is nothing but we learn, that is it is a money cost which has been calculated here. So in short term, that is the money is been presented. So here are some of the factors of production whose quantity can be changed easily with the change in quantity of factor of production. सो मीन्स यहाँ पे क्या बोल रहे कि देर आर मैनी फैक्टर्स और सम फैक्टर्स विच आर देर वहाँ पे, इफ देर इज़ अ चेंज इन द क्वांटिटी, देर इज़ अ चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन. मतलब हम अगर कोई प्रोडक्शन के लिए, फैक्टर प्रोडक्शन के लिए कुछ चीज़ें लाते हैं, रॉ मटेरियल वगैरह, लेबर वगैरह, अगर उसके अंदर कोई चेंज कर दिया तो इसके वजह से हमारे यहाँ पे पूरा चेंज दूसरी जगह पे आ जाएगा. So ultimately when there is such type of change, there is quantity of production also change with the change in short period. मतलब थोड़े ही टाइम में, जैसे फॉर एग्जांपल सीजनल कोई सेल्स कर रहे हैं तो थोड़े ही टाइम पे अगर अगर फॉर एग्जांपल लाइक विंटर सीजन वाज देयर तो वहाँ पे वो लोग सेल कर रहे थे woolen clothes. Then after this summer season, so they started selling the cotton clothes. Again when comes in the rainy season, they started selling this. पूरा स्टॉक खत्म कर साइड पे रख दिया और दूसरा स्टॉक लाया, दैट इज we find that nothing but we can say raincoats and umbrellas. So ultimately this particular short period के time पे पूरा change करते रहते हैं, that time you find that they are known as variable factors. Again you find that expenditures on these factors are known as variable cost. मीन्स यहाँ पे जो भी एक्सपेंडिचर हो रहे हैं वो उसको बोलेंगे वेरिएबल कॉस्ट. देन कम्स दी ऑन दी अदर हैंड, जैसे लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे तुम लोग अकाउंट्स में पढ़े होंगे, सो फॉर फिक्स एसेट्स लाइक मशीनरीज, बिल्डिंग्स, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ्स, दैट इज अ ह्यूमन कैपिटल इज नोन के. सो विच कैन नॉट बी चेंज, वो हम चेंज नहीं करते. ज़्यादातर बिजनेस के अंदर हम डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ गुड्स वी आर सेलिंग, लाइक आई टोल्ड यू, लाइक वुलन क्लोथ्स से लेके कॉटन क्लोथ्स से लेके रेन कोट अम्ब्रेला तक. सो वी हैव चेंजिंग द प्रोडक्ट एट द सीजनल टाइम. So here we are not changing the admin stuff, we are not changing the we can say building वगैरह everything. So all these particular things cannot be changed in a short period of time. So this particular things which cannot be changed in a short period of time, they are known as what, fixed factor of production. मतलब वो लोग फिक्स रहेंगे पूरे बिजनेस के टाइम पे, ज़्यादातर वो फिक्स रहेंगे, वो लॉन्ग टर्म के अंदर चेंज होता नहीं है. एंड द कॉस्ट ऑफ सच फैक्टर इज नोन एज फिक्स कॉस्ट. उन लोग को मीन्स वी आर परचेजिंग building machinery, we can say different furnitures, office thing, equipments, तो उसको बोलेंगे फिक्स कॉस्ट. ओके, व्हेन वी आर परचेजिंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, व्हेन वी आर परचेजिंग फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, रॉ मटेरियल्स, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो परचेज करते हैं शॉर्ट पीरियड के लिए, तो अल्टीमेटली उसको बोलेंगे, वी फाइंड दैट इज वेरिएबल कॉस्ट. नाउ लेट्स गो विद द detailed understanding of short term. So here the short term is such a period in which producer cannot change the size of the firm. मतलब producer, अगर आप एक छोटा बिजनेस लेके बैठे हो तो उस छोटे बिजनेस को आप तुरंत ही बड़ा बिजनेस नहीं कर सकते. वेरी इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड यू कैन नॉट, यू हैव टू गो विद अ स्ट्रेटेजी फॉर यू हैव टू थिंक फॉर अ लॉन्ग टर्म. सो इन अ विद इन few months we cannot go with multiple, or we can say big, we cannot change the size of the firm. So here, but we can increase the production. Yes, the ultimately thing is that if your business is going well good, you can increase the production. But प्रोडक्शन इंक्रीज करने का मतलब नहीं है कि आप अपना साइज बढ़ा सकते हो. ओके, इट विल गो व्हेन यू परचेज थ्रू 3 मोर बिजनेस फर्म, दैट इज कॉल्ड एज इंक्रीज द साइज ऑफ द फर्म. बट वही जगह पे आप जो पहले कम सेल कर रहे थे, आज ज़्यादा प्रोडक्शन करके ज़्यादा सेल कर रहे हो, दैट इज़ नॉट. सो दैट इज़ वॉट वी कैन से, this is a short term period where you can increase the production but we cannot increase the size of the firm. So you're increasing the production capacity. Now in short term such time period we find that the factor of productions are fixed. यहाँ पे शॉर्ट टाइम के लिए कोई फैक्टर्स, मतलब जो फैक्टर्स लगते हैं प्रोडक्शन के लिए, जैसे वी कैन से इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, डिफरेंट चार्जेस आते हैं, वो फिक्स ही रहेंगे.
उसका कोई चेंज आएगा नहीं. मतलब इफ़ यू आर वर्किंग 8 hours, योर प्रोडक्शन इज डन 24 hours, सो 24 hours का जितना इलेक्ट्रिसिटी बिल है उतना ही आएगा. बट अल्टीमेटली यू मेड सो मेनी डिफरेंट लेबर्स टू कम जॉइंट एंड यू मेड द स्टफ ईजी. मतलब एफर्ट्स जो पर पर्सन वो था वो कम कर दिया और प्रोडक्शन बढ़ गया. सो दिस इज़ वॉट इज़ हैपनिंग अप. सो फॉर एग्जाम्पल प्लांट हैवी मशीनरी बिल्डिंग्स वगैरह है, फैक्ट्रीज वगैरह है, एक्सेट्रा, विद द इंक्रीज और डिक्रीज इन वेरिएबल फैक्टर्स. मतलब ये तो है ही, मीन्स ऑल दिस आर फिक्स. लेकिन इसके अंदर अगर वेरिएबल फैक्टर्स क्या है, रॉ मटेरियल. अगर आपने रॉ मटेरियल ज़्यादा डाला तो ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, लेबर ज़्यादा डाले तो वी कैन से इट विल हेल्प यू टू मैनेज ऑल द प्रोडक्शन फैक्टर. देन आफ्टर यू फाइंड इलेक्ट्रिसिटी. यस, दिस इज बिन रिक्वायर मोर, बिकॉज अगर आपने प्रोडक्शन बढ़ाना है, मेनी टाइम्स इट हैपन्स दैट you go with overtime. पहले आप सिर्फ लाइक आई टोल्ड इन द प्रीवियस वन दैट इज 24 hours, बट सपोज आप 8 hours ही काम कर रहे हो, मतलब 8 hours का आप ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर सकते, तो यू गो विथ 16 hours. सो लाइक दिस we can say that is how you find electric consumption can increase if you are going with from short period to long period of time. So in short term, शॉर्ट टर्म इज नथिंग बेसिकली. आप 3 साल पकड़ लो, मीन्स इफ यू आर गोइंग विद अ बिजनेस फॉर्म 1 year to 3 year ऑफ गैप, यू फाइंड दैट इन बिटवीन दैट इज अ शॉर्ट टर्म वेर यू ट्राई टू थिंक दैट योर बिजनेस can grow. You business you are starting, you can grow your business. So that particular time you just at that particular shop, मतलब आपका जो लिमिटेशन है, जितनी जगह है, जितना मशीन उस पर ही काम करोगे, you just increase the production if the demand of your products are increasing. So ultimately you can increase the production sector in short term, but you cannot increase the size of the firm. So all these heavy machineries, buildings, factories, everything is been there. But what you try to do, your variable factor is that is raw material, labor and electricity, which you try to increase, जिससे आप प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो. So ultimately because of all this faction you find that production can be increase or decrease. अगर कम चलना है तो आप you reduce the time. So this is what is happening in short term. So in short term there is a period where producer cannot increase the size or cannot change the size of the firm, but can increase the production or decrease the production with the use of factor of production. ज़्यादा factor of production लाके आप ज़्यादा कर सकते हो, कम factor of production लाके कम कर सकते हो. Then comes the long term. Here long term period talks about more than 5 years, where you find it is a long term is a period which producer can change all the factor of production. मतलब अगर आपका बिजनेस है, आप बहुत साल से चला रहे हो, फॉर एग्जाम्पल पास्ट 20 years यू आर रनिंग योर बिजनेस, पास्ट 10 years चलो. सो व्हाट इज हैपन, द टेक्नोलॉजी हैज़ इंक्रीज सो मच, तो आप नई टेक्नोलॉजी वाले मशीन्स लाओगे, इक्विपमेंट्स लाओगे, योर एंट्री विल बी डन इन कंप्यूटर और लैपटॉप और डायरेक्टली ऑनलाइन. So all these facilities, everything are required to be changed. So in long term you find that जो fix थे, वेरिएबल मीन्स शॉर्ट टर्म के लिए जो फिक्स फैक्टर्स थे, मशीनरी वगैरह जो चेंज नहीं कर सकते, आप लॉन्ग टर्म में चेंज कर सकते हो. सो प्रोड्यूसर कैन चेंज ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. सो इन दिस पीरियड ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर कॉल्ड एज व्हाट, वेरिएबल. सी वेरिएबल इज मतलब आप जो चेंज कर सकते हो उसके अंदर आप कभी भी चेंज कर सकते हो, उसको वेरिएबल है. फिक्स मतलब उसको चेंज नहीं कर सकते. सो पीरियड वी आर टॉकिंग अबाउट अ टाइम पीरियड. सो शॉर्ट टर्म के अंदर क्या होता था कि आप प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते होते. सो रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी एंड यू फाइंड दैट लेबर आर द वेरिएबल. मतलब वो आप ज़्यादा बड़ा कम कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे आपका साइज़ इतना बड़ा पैसा नहीं होता शॉर्ट टर्म बिजनेस के अंदर कि आप एक ही बार में 1-2 महीने के अंदर आप अपना बिजनेस बहुत बड़ा कर दो. नो, सो यू हैव टू गो विद द स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम. बट इन दैट ऑल दैट मशीनरी पे आप ज़्यादा काम करोगे कि 2 महीने हुआ मशीनरी ला के और आप उसके अंदर वापस चेंज करोगे. नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एनी स्मॉल स्केल बिजनेस मैन. सो फॉर देम दे नीड टू कंटिन्यू विद द सेम थिंग फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. अगर सिंपल एग्जाम्पल की बात करो तो आप वेंडर्स वाले को देखो, शॉपकीपर्स वाले को देखो, तो एक ही 2 महीने में या 5-7 महीने में दूसरी 2-3-4 शॉप्स खड़ी करते. नो. सो अल्टीमेटली अगर उसका कुछ वेंडर वाला काम या फूड जो कैटरिंग है वो अच्छा चल रहा है, दे विल इंक्रीज द प्रोडक्शन अल्टीमेटली. सो सेम वे इफ इट इज़ अ लॉन्ग बिजनेस, लॉन्ग टर्म बिजनेस मतलब बड़ा बिजनेस जिसका बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, MNCs आर देयर, मल्टीनेशनल कंपनीज आर देयर. सो देयर दे कैन चेंज द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. वाई, कई 5 years तक उन लोगों ने प्रोडक्शन किया, वो बहुत कमा लिए, तो उन लोग ने अभी वेरिएशन लाने के लिए चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी किया, पूरा प्लांट के अंदर न्यू टेक्नोलॉजी ला दिया. सो ऑल दिस पर्टिकुलर थिंग्स आर हैपनिंग इन मोबाइल कंपनीज और डिफरेंट बिग IT sectors you find. So for them all the factor of productions are variable, but all the factor of productions are fixed under short term.
अगेन यहाँ पे एग्जांपल ले तो प्लांट, हैवी मशीनरी, बिल्डिंग, फैक्ट्रीज एक्सेट्रा बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फैक्टर प्रोडक्शन। मतलब अगर हम सपोज बहुत 5 साल में बहुत अच्छे से कमा लिए तो हम क्या करेंगे, दूसरा एक प्लांट, अगर आप बिजनेसमैन हो, बड़े बिजनेसमैन हो, 5 years यू हैव अर्न सो मच, आपके पास इतनी पैसा है कि आप दूसरा सेम प्लांट रख सकते हो। प्लांट हियर मीन्स सेम प्रोजेक्ट, सेम बिल्डिंग, जैसे ही बिल्डिंग में काम कर रहा है वैसे ही पूरा मशीन ला के आप दूसरी प्रोडक्शन बना सकते हो यूनिट। सो दिस इंक्रीज योर मोर प्रोडक्शन। सो अल्टीमेटली आप ज़्यादा प्लांट्स लाओगे, हैवी मशीनरीज लाओगे, एक पूरा बिल्डिंग अलग से प्लांट करोगे, फैक्ट्रीज बनाओगे, तो अल्टीमेटली आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो दिस विल अगेन इंक्रीज योर प्रोडक्शन। सो प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज इन अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। आप लॉन्ग पीरियड में आप सोच सकते हो 5, 10, 15, 20 साल के अंदर। जैसे रिलायंस, यू फाइंड दैट एक पर्टिकुलर सेक्टर से डेवलप हुआ, उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स ही एक्वायर्ड, एंड नाउ यू फाइंड दैट देयर आर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स विच ही इज गोइंग इज रनिंग। सो इन अ लॉन्ग रन इट इज़ बिन पॉसिबल, बट इन अ शॉर्ट टर्म, जैसे जियो स्टार्टिंग में आया 3, 4 years, sorry 2 years they were giving free of internet, then after they started charging on it. So ultimately क्या हुआ, आफ्टर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू फाइंड दैट दे हैव स्टार्टेड मेकिंग चेंजेस। लॉन्ग टर्म में यही है कि आप फॉर अ लॉन्ग टाइम you are going with particular thing, you can change the factor of production, but in short term you cannot change the factor of production, but ultimately you can change variables, raw materials like electricity consumptions, you can change labor with the increase or decrease in the product. सो आपको जो करना है वो आप शॉर्ट टर्म के लिए अंदर साइज में चेंज नहीं कर सकते, लॉन्ग टर्म के अंदर साइज के अंदर चेंज कर सकते हो। अल्टीमेटली प्रोड्यूसर कैन चेंज द साइज ऑफ द फर्म बाय डूइंग, सो ही कैन चेंज द टोटल प्रोडक्शन, he can change the total production for a large extent in a long term. ज़्यादातर जैसे in this pandemic situation before, earlier you find that how many of them were using sanitizers or wearing masks, which was not there, but this has been made, what you find that कि ये सिचुएशन आने के बाद द प्रोडक्शन ऑफ सैनिटाइजर विच वॉज देयर, पहले भी होता था, पहले भी बनते थे, बट एवरी पीपल वर नॉट यूजिंग, बट हियर इट वॉज बीन मेड कंपल्सरी, हैंड वॉशिंग, यू फाइंड दैट प्रॉपर सैनिटाइजेशन, देन आफ्टर सैनिटाइजर्स विच आर बीन मेड। सो अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म के अंदर उन लोग ने प्रोडक्शन चेंज किया, मीन्स इफ देर इज अ केम ऑफ डिमांड फॉर देम, उन लोग ने एक नया प्लांट, नया एवरीथिंग दे हैव मेड. So it is for the long period. Now every year there will be, or every month there will be requirement of sanitizers every now and then. So this is what is happening up. Ultimately this is what we find that नया प्लांट भी वो लोग रखेंगे सैनिटाइजर बनाने के लिए. So same way mask also, earlier was mask इतना ज़्यादा नहीं, only for the doctors which has been made, but you find that nowadays everyone are made compulsory to wear mask because under this particular pandemic situations. So the production of that particular mask has increased over the period of time. तो वो शॉर्ट टर्म के लिए आएगा क्योंकि वो थोड़े टाइम के लिए, बिकॉज ज़्यादातर अभी घर पे बना रहे हैं. दो N95 इज़ मेड इन आउट्स मीन्स वो बनाते हैं, तो वो दैट इज़ अगेन अ डिफरेंट थिंग. हम रेगुलर मास्क की बात करूँ, वो शॉर्ट पीरियड क्या आएगा. इफ़ यू आर गोइंग विद N95 विच वॉज अर्लियर मेड ओनली बाय द कंट्री, जैसे हमारी कंट्री बना रही थी, परचेज कर रही थी बाहर से, सो अल्टीमेटली दैट पर्टिकुलर प्रोडक्शन has increased. So this is what short term and long term. Short term talks about the changes in variable factors, that is raw material and everything, where the fixed factors does not change. But in long term, fixed factors like machinery, heavy machineries are changed. That is, and because of that, factor of production also are being changed. So this is what all is about fixed and variable, long term and short term. Now in next class we are going to learn about the classification of production cost. So production cost के अंदर क्या चीज़ रहता है, we are going to learn about that. So here is one table which has been there. So you find that classification has two part, that is short run and long run, मतलब short period and long period. तो शॉर्ट रन के अंदर क्या आता है, फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट. फिक्स कॉस्ट मतलब जो फिक्स रहता है कंपनी के फुट थ्रू आउट द ईयर, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आते. जैसे वी कैन से इंश्योरेंस रहता है, लाइसेंस रहता है, सम ऑफ द ऑफिस चार्जेस आते हैं, तो वो फिक्स रहते हैं. वेरिएबल मतलब जो हम चेंज करते रहते हैं. रॉ मटेरियल अगर ज़्यादा प्रोडक्शन का तो रॉ मटेरियल ज़्यादा डाला, कम प्रोडक्शन का तो रॉ मटेरियल कम कर दिया. लेबर ऑल्सो सेम, डिपेंड्स ऑन द मोर प्रोडक्शन मोर लेबर्स, लेस प्रोडक्शन लेस लेबर्स. सो दैट पर्टिकुलर थिंग अगेन दे हैव, बोथ ऑफ देम आर हैविंग
average fixed cost and average variable cost. So all this are factor of, so we can say production cost which has been there, and you find that they are coming under short run. Whereas long run की बात क्यों नहीं कर रहे, because long run we can change the whole factor, मतलब पूरा लैंड लेबर कैपिटल पूरा बिजनेस चेंज कर सकते, पूरा प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग अलग से डाल सकते, एवरीथिंग कैन बी पॉसिबल इन लॉन्ग रन. सो बट इन शॉर्ट रन दिस ऑल थिंग्स आर देयर कि कुछ लिमिटेशंस आती है, फिक्स ही रहता है, वेरिएबल के अंदर आप चेंज कर सकते हो जिससे प्रोडक्शन इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो. आई होप यू हैव बीन क्लियर विद दैट. वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस नेक्स्ट लेक्चर अबाउट द होल प्रोडक्शन कॉस्ट. So we'll start with the fixed cost that time, and we are going to learn how this fixed cost is there, what are the things coming under fixed cost, everything we are going to learn. I hope you are getting this. If you are having doubt, you can just call or message me. Thank you.